All right, there's some more breaking news coming in, and the Supreme Court has delivered a key judgment on the question whether Benami Transactions Prohibition Amendment Act could be applied retrospectively. The top court says that there is only prospective effect of the 2016 Act, and thus all the actions taken before the amended Act also is set aside. There is no retrospective effect of such a provision. So this is a big order by the Supreme Court. The Supreme Court has delivered a key judgment. This is in connection to, this is on a question whether the Benami Transactions Prohibition Amendment Act could be applied retrospectively. The top court says that there is only prospective effect of the 2016 Act, and thus all the actions taken before the amended Act also is set aside. There is no retrospective effect of such a provision. All right. I am being joined by Gaurav Srivastav on the broadcast for more. Gaurav, ये इस जजमेंट को आप हमें एक बारी हमारे दर्शकों को इस जजमेंट के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस की बेंच जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 और साथ ही साथ इसमें 2016 में हुए अमेंडमेंट्स को लेकर जो है सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ तमाम याचिकाकर्ताओं ने असंवैधानिक बताते हुए इसको लेकर एक जो है याचिकाएं लगाई थी। जस्टिस एनवी रमन्ना, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली की जो बेंच है उसने आज आदेश देते हुए कहा है कि जो 2016 में संशोधन हुआ और उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू करने का जो केंद्र सरकार का फैसला था कानून में अमेंडमेंट करके, जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। और अब ऐसे में 2016 से पहले के मामलों में अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई हुई होगी जिसमें भी आरोपियों को 3 साल की सजा या 2 जुर्माने की सजा की गई होगी, वो सभी जो कार्रवाई थी वो पूरी तरह से निरस्त हो गई है, नल एंड वॉइड हो गई है। साथ ही साथ ये बेनामी एक्ट का जो ये प्रावधान है वो भी असंवैधानिक करार हो गया है। और ऐसे में ये काफी बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो कि इस बात पर लेकर आए थे कि इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिवली किसी कानून को लेकर उसमें कार्रवाई करना जो है वो असंवैधानिक है। और कोर्ट ने माना कि ये संविधान के अनुच्छेद 20(1) का भी एक तरह से उल्लंघन है, क्योंकि जिस तरह की सजा है उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान जो है किसी भी कानून में नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल गौरव, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। एंड आई एम बीइंग जॉइंड बाय Majeed Memon on the phone line. Sir, if sir, we are getting some breaking news that the Supreme Court has in fact delivered a judgment on the question whether Benami Transactions Amendment Act could be applied respectively, and in fact the Supreme Court has gone on to say that there is only prospective effect of the 2016 Act, and that's all actions that have been taken before the amended Act also is set aside. So if you could please break this down for our viewers. Well, in criminal jurisprudence, invariably there is an assumption that the law, when it comes into force, is to be applied even only after it has been brought into force. It cannot have retrospective effect broadly and generally. There are exceptions which the courts may, while interpreting the provisions of special laws, may exceptionally allow its application retrospectively. So this Benami Transactions Amendment Act also would become effective only from the day when the legislation is through, and it cannot certainly apply to the transactions that may have occurred prior to the law coming into force. So this is nothing very shocking, and I think it is in accordance with the general principles of criminal jurisprudence. Right, Mr. Memon, many thanks for joining us here on Mirror Now. नहीं हो रहा, मैं क्या करूं?